today's session. Thank you for joining us. At Turtle Wealth, remind us money is made at exits, not at entry. This sets the stage for our discussion on mastering the exit mantra platform. To guide us through, would like to call Rohan Mehta, CEO and Fund Manager of Turtle Wealth. Now would like to hand over to Rohan sir. Thank you, Kajal. Thank you everyone for joining on Sunday. हमारा थोड़ा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे और कुछ ऐसा दिखाए कि जो हमने किया है. Kajal has been our project head onto Turtle, onto Exit Mantra. Jemish, who is into panel, is our quant head, and Vibhati, of course, everybody knows she's our co-founder and CEO of company, and Hardik will be joining soon. He's the CIO and of course the co-founder and partner of the company. So this is our new venture on SaaS based model called Exit Mantra. अभी भी मेरे मुंह में Turtle Wealth ही आता है, Exit Mantra आ नहीं रहा है. But I hope so soon it comes into my my tongue very fast. So Exit Mantra हमने कैसे बनाया, हमारी क्या जर्नी थी, थोड़े उसके ऊपर बात करेंगे. फिर थोड़ा टेक्निकल लेवल पे बात करेंगे कि क्यों हम एग्जिट की बात नहीं करते हैं वर्ल्ड वाइड. और तीसरा कि एग्जिट मंत्र को कैसे आप यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत हेल्पफुल रहे. और एक ऐसा मॉडल हमने क्रिएट किया है जो एक्सट्रीमली अनबायस्ड है. उससे मार्केट आप क्या सोचते हो, मार्केट क्या सोचते हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है. प्योर डेटाफिकेशन पे है. देयर इज नो स्टोरीफिकेशन इन द होल प्रोसेस, एंड यू विल लव दिस. जितने भी लोग ने देखा है, जितने लोग ने फीडबैक दिया है, आई हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी दैट द लेवल ऑफ द थिंग्स व्हिच it started with. So I'll start with my investing journey, right? It's very interesting. So मैंने निफ्टी 500 का चार्ट रखा है from inception. This is 2000. Let me put a pointer over here. This is 2008, right? And I started in 2000, somewhere around 6. Very half naive student. अभी भी मैं अपने आप को naive ही समझता हूँ, पर तब तो पता ही नहीं था मार्केट कैसा चलता था. Everybody would be very surprised. Actually, my wife taught me how to do trading and investing because my father-in-law and her father happened to be a very sound investor and a trader. So that was how it happened. She told me that this is how the trading happens and stuff happens. So 2006, I started my career in markets and specifically started to put money in the markets. I lost a lot of money. I think so. Everybody's story is them. And 2006 के बाद ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, 2007 आया. मीन्स आप कुछ भी लो, यू मेक मनी, राइट? तो देन आई वाज आल्सो लक्ड आउट. मेरा टारगेट होता था एवरी डे टू अर्न 5000 रुपीज, राइट? एंड मैं पाँच मेरी सैलरी तब मेरे हिसाब से तकरीबन एबीएन एमरो में था मैं. 18,000, 15-18 हजार रुपये सैलरी थी मेरी. तो मुझे ऐसा तब लग रहा था कि यार 5,000 दिन का बना दूं तो आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड एक्चुअली आई थॉट दैट आई वाज वेरी स्मार्ट, बट आई वाज नॉट. इफ द मार्केट वाज वेरी स्मार्ट. एंड धीरे धीरे क्या हुआ, फिर हम लोगों को मिलने गए, ये करने लगे. पर मेरे तब जब मैं जॉब करता था तब एक अंकल आते थे, तो उसने बोला कि रोहन, कभी भी इन्वेस्टर होने के लिए कब लेना वो बहुत जरूरी नहीं है, कब बेचना वो ज्यादा जरूरी है, और कोई फोकस नहीं करता. और मैं ये 2006 की बात कर रहा था, तो तब से ये मेरे दिमाग में था कि मैं प्रॉफिट बेचूं या ना बेचूं, मैं लॉस तुरंत बेच दूंगा. एंड दैट इज मे बी दैट वन आइडिया हैज मेड मी सर्वाइव्ड from like near about now 20 years in markets. That the only idea. And 2007 फिर लोग बोलने लगे ये स्टॉक ले लो, लेके भूल जाओ, ये स्टॉक ले ले लेके भूल जाओ. मुझे पता है एक कंपनी थी लेंको इंफ्रा. I was trading at 300% of profit, and I went to someone and asked that should I sell it, and he told that पागल है क्या, ये 10x के नीचे बेचनी ही नहीं चाहिए थी. And 2007 happened. Everything was like a honeymoon period for us. Every day money was coming, and it was amazing. Now 2008 January December, I joined Jainam as a research head, and I thought that the strategy what I have made money in 2007, I will use it and make money for Jainam investors in 2008.
And December, I think so, November, December, November, roughly 27th November 2007, I joined Jainam as research head. And December was decent. I think so. December was a bit volatile. And January, the biggest fall of lifetime came. And I didn't know how to react because मुझे तो पता ही नहीं था कि स्टॉक नीचे भी जा सकते हैं. And market really went nearly about 60% down. The great stocks, I'm giving names like ICICI Bank, HDFC, and that type of stocks were up, like 80, 90% down. And nobody knew what to be done. Means ये सब stock जो बोलते थे, I remember Lanco Infra went nearly about 90% down, and eventually the company collapsed. There was a company called Walchand Nagar Industry. If anybody is old like me, anybody remembers Walchand Industry? If you can raise hands. अभी भी है, listed है. तब तो it was like a cult, right? It was like an MRF. बहुत सारे लोग जो वालचंद के फैन हैं. तो मेरे पास वालचंद इंडस्ट्री था, और वालचंद इंडस्ट्री यूज टू बी, मीन्स इसके पास था, वो सब ऐसे कैटेगरी में आते थे. रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा की सर्किट, बायर सर्किट, तकरीबन मेरे हिसाब से 3 महीने तक खुली ही नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो मुकेश अंबानी के पास है और था तब. एंड अनिल अंबानी was catered to be bigger than Mukesh Ambani. And this all stories. And Suzlon was one of the top pick of आज हम बात करते हैं ये सब ग्रीन एनर्जी की. सुजलॉन 2007 में ग्रीन एनर्जी की विंड मिल की बात किया करते थे. So it was a gloomy world, and 2008 everything was house of cards, everything fall down. And then October, I think so, January, February, March was a bit recovery, and 2000 October everything again fall down to the lowest level of life. बिलीव मी, ये बहुत अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होता था. एवरी फॉल वी सी, वी फील दैट इट वुड हैव बीन ग्रेट कि हमने पहले इन्वेस्ट कर दिया होता. एंड एवरी टाइम द सेकंड फॉल कम्स, द करंट फॉल कम्स, हमको लगता है कि बेच दिया होता तो अच्छा होता. So this all collapsed, everything was done and dusted, and 2009 came. Now 2009 was a denial. Nobody accepted markets, everybody went out of market. At the same time, real estate markets did 2009 say fairly well. Gold did superior, stupendous gold did very well. So nobody was, going for it. But the interesting part was that in 2008-9, FMCG stocks started to come up as an all-time high. And nobody saw that because the sector rotation happened, और तब लोग sector rotation इतना समझते नहीं थे. तो सब वही रिलायंस में और वही में घुसे हुए थे, सुजलॉन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में. और यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल टाइम हाई कर रहा है, जिलेट ऑल टाइम हाई कर रहा है. और nobody understood this, and people thought that Hindustan Unilever कौन ही ले, because Hindustan Unilever 7 8 years were the same price from 2002 to 2000 maybe 8 or 9, and it started to move. And then again market for good 4 years was at same level. I think so nobody was interested in market, everybody was only there कि एक बार भाव आ जाए हम निकल जाएंगे. And 2014, I think so, this is 14 if I'm not wrong. So 8 9 10 11 12 13 14, perfect, 14, Modi ji came, the new government, the new thought process came, and the whole new sector started to turn around. Infrastructure started to build up, banking, financial, and the quality started to pop out very well. So here your FMCG and quality stocks made money. Here your infrastructure and stuff started to make money. 2017, 18, 16, chemicals started to make money and made nearly about 20-25x money. And we made a very good fortune by investing into chemical stocks which nobody believed in. And then 2009, and then we saw COVID came, and then again new sector started. I think so this was the candle of COVID. Then again the new sector started to pop up. 2000 after COVID, I think so a bit of quality coffee can stocks did better. And then after, once the economy started to grow, then again the new stocks started to pop out. 2008, sorry, 2021, 22, 22 auto made a lot of money. Now currently BFSI and NBFC is doing very well. So my whole journey was, the point was that the stock which I thought in that year which will make a lot of money
in next 3 years, and these are all good stocks I am talking, right? I'm not talking stocks which are, which are like very low quality stocks or unknown stock. I'm talking a Nifty 500 stock. और ये सब पीछे रह गए. Now I'm talking the names of Asian Paints, HDFC, Reliance Industry, Pidilite, TCS, and the names of BLS, chemicals like SRFs, Rain Industries, and this all stocks I'm talking for. And it is so tough to understand that which makes money and which doesn't. So ये मेरी पूरी इन्वेस्टिंग लाइफ में मैं एक चीज समझ गया हूँ कि मनी मेकिंग इन मार्केट हैज टू बी like changing the direction whenever there are roads which are changing. आप एक ही स्ट्रक्चर पे सेट करो तो it's good, means if you don't have to answer, or else it is very tough. So this has been my roughly investing journey. I tell myself how much money I made or how much it is, it's not very important. There are roughly मेरे साथ करियर चालू करने वाले तकरीबन 1% लोग आज इंडस्ट्री में हैं. So that's the most important part. And then I understood this very well, right? Everybody, if I have made a presentation on top 10 companies to buy for 2025, today, right now, we have 123 participants right now on the Zoom webinar. There would have been 1,000 participants to buy to see this webinar, which are the 10 stocks. Buying में सब लाइन में खड़े रहते हैं, सेलिंग में कोई लाइन में नहीं आता है. और इसका रीजन भी यह है कि हमको बचपन से सेलिंग सिखाया ही नहीं गया है. और उसका दूसरा रीजन भी यह है कि 2008 के बाद हमने कभी भी इतना बड़ा फॉल मार्केट में भी नहीं देखा है. सो मोटा मोटी इफ स्टॉक वुड हैव डन वर्स्ट, कोई कंपनी होगी और कुछ गलत हो गया तो अलग चीज है, बाकी मोटा मोटी कंपनी हैज डन डिसेंट, राइट? सो वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ negativity which has happened. I'll give you an example. If you see Japan index from 1992 till today, it has been same. London index, that is FTSE, has been the same. So it's we have been very lucky that we have seen a consistent growth in equity markets. But if we would have been a larger economy like a Japan or London or European markets, it would have been a very tough time for us. Now, you may say that Rohan, we have been very good economy and that's great. I agree to it. But हमारा भी टाइम कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ही कि जब हम डेवलप हो जाएंगे और हमारा डेवलप रेट कम हो जाएगा. कब होगा मुझे नहीं पता है, but somewhere around it will happen. So, sorry. Yeah. So, and then we talk on Warren Buffett, right? That Warren Buffett has been the two rules. First, buy stock and never sell, or no, don't make loss. And second rule, go back to the first rule. ये कोर्ट ने इतने लोगों को बर्बाद किया है because people didn't understand how it works. So the whole our favorite holding period is forever, which Mr. Buffett says, and I don't have any audacity to challenge Mr. Buffett, and I have been a very big fan on the other side of the territory of how he runs the business and how he creates his life. But now look at it. The average holding of Buffett's investment, Berkshire Hathaway's investment, is 4 quarters. Only 4 quarters. On an average, every 4 quarters, so that is somewhere around an year, they sell the security. Now you may say that Rohan, they have Gillette and they have American Express and they have this all great stocks, Coca-Cola. Why they're not sold? The reason is they're not sold because they can't sell it. If they sell it, it would go down, or because they have so much of chunk. If you see Apple, they have cut down much of their holding of Apple. So आप सब जो यहाँ पे वॉरेन बफे के फैन हो, जो मैं भी हूँ, इन्वेस्टिंग फैन हो जो मैं नहीं हूँ, तो मैं आपको ये चीज थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इतना भी वो लेके भूलने वाले है नहीं. एंड दिस इज अ फ्लेम यूनिवर्सिटीज slide. It is not my slide. So and cognitive aspects of selling is also very important. So there are 4 5 points. Selling at loss is one of it, right? कि भाई कंपनी नहीं चल रही है, बेच दो. दिस इज वन. और ये तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं. मैं कितने लोगों को पूछता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार लॉस में क्यों बेच दिया कंपनी को. तो दिस इज वन.
Averaging loss, holding for losers and expecting it to bounce back. I bought at 100, I will buy it at 80, and then I will go at 60, and then my average is 80. So once the stock goes 80, I am at my break-even point. And then trimming, reducing concentration, maximum outcome of momentum, etc. Winners, positive feedback, multi-baggers to go forward for. But the interesting part over here is this three, and that is loss of capital, alternate opportunity cost, and self-doubt. अभी आपके पास कोई स्टॉक है जो 100 रुपए का है और 80 हो गया, और आपको लगता है कि बेच देना चाहिए, एंड यू डोंट सेल इट, एंड अगेन इट कम्स एट 100. It is one of the riskiest thing which we do, and that is we hold, and we now in every of the stock we expect कि 100 वाला जब वो 80 जाएगा और फिर से वो बाउंस बैक होगा, बिकॉज एक दो में तो हम लक्ड आउट हो गए, बाकी के स्टॉक्स है उसमें शायद हम फंस सकते हैं. और बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल से इंपॉर्टेंट सिर्फ लॉस ऑफ कैपिटल नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम वो स्टॉक होल्ड करते हैं, उसमें हमारी रोटी बिगड़ती है, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. Because alternative opportunity cost of time correction, let us I give you an example. I had an hold on HDFC Bank in 2008, or maybe it was a Centurion Bank and then it merged to HDFC Bank. HDFC Bank for 5 6 years was near about same price. The same time Hindustan Unilever went nearly about 5x higher. So did I make a mistake of holding HDFC Bank? No, of course not, because HDFC Bank was great, or Centurion Bank, then it merged. But as a point, money, I did a mistake because Hindustan Unilever did much more better. So my alternative opportunity cost in time of correction is very high, and then I always self doubt कि यार ये मैं बेच दूंगा और कल उठ के कोई दूसरा स्टॉक चल जाएगा तो मेरा लॉस आ जाएगा. And that is the reason the whole thing works on, if it is data, that's the only way you can outperform your emotions. There is no other point. And this I love to the hardcore point. The selling stock in profits, but when stocks goes after up after selling, we don't like it. So selling is not only on one area of booking loss. There are three areas. One, selling stock which are not performing, which are not good company. Second, selling stocks which are not performing. And third is then holding stocks which are performing. ये तीनों का मिश्रण बहुत जरूरी है, वरना हम वीड्स को तो कटते काटते रहेंगे पर फ्लावर को ग्रो नहीं करेंगे तो वो गार्डन बनना बहुत मुश्किल है. And this is a very classic example. This is Isaac Newton, a guy debatable, one of the most highest IQ, and he invested in a company, invest a bit, and then exits very happily. And this is exactly what has happened to Mr. Newton, right? Newton's friends get rich. Newton's re-enters with a lot of money into it. Stock goes down. Newton expects that stock will recover, and then Newton exits over here, and eventually Newton gets broke. Now we are talking one of the sharpest and highest IQ mind of the humankind, and if he cannot pick up the art of investing, I think so what we are. Of course, at that point of time, there was no technology, there was more human emotion rather than the datafication. But yeah, for sure, if Newton can do it, we all are much more lower to what Newton thinks of. And then I wrote this book called The 212 Degree, The Complete Trader. I'm now marketing this book. And anybody who wants this book, we are on a free giveaway. You can put a message to our on an email. We will send you the book via Gujarati, in English, both. But this book was one of the reasons to tell people that why exits are very important. And then I just took this picture in the morning. This is a picture which is ये मेरे घर के बाहर का पिक्चर है. एंड व्हेन आई मेड दिस होम आई रोट व्हाट आर द स्टॉक्स व्हिच मेड मी टू मेक दिस होम. And it was Bank Nifty, Britannia, God of course, because Turtle Wealth, my company, Wellspun, Crude, Sterlite Technology, Biocon. And if you talk most probably, the stocks are Britannia, Biocon, Wellspun, India, Sterlite Tech, maybe Crude and Bank Nifty. 90% of the stock जो प्राइस पे मैंने बेचा था तब घर लेने के लिए,
आज वो प्राइस फिर से नहीं आया। एंड दिस आर द गुड स्टॉक आई एम टॉकिंग, दे आर नॉट लाइक एनी क्रैप कंपनीज आई एम टॉकिंग। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग गॉड दैट गुड आई बॉट अ प्रॉपर्टी इन प्लेस ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज अगर वो स्टॉक मैंने रख दिए होते तो नहीं घर आता, नहीं ये आता। तो समटाइम्स बाइंग अ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट इफ यू हैव अ बैड स्टॉक टू एग्जिट आउट। एंड दिस इज माय लवलीस्ट पॉइंट। मैंने ये बहुत बोला है, फिर से मैं बताता हूँ। ये मेरे पापा का इन्वेस्टमेंट है। 1992 इन्वेस्टेड इन 1000 रुपीज। इफ यू सी द नेम इज विनू भाई डी मेहता, इट्स माय दादाज नेम। देन वी सॉ इन 2018 दिस कंपनी हैपन टू बी 200x, बिकॉज हम भूल गए। And then this is my mom who I think so every mom, wife, sister have invested in gold and has been an extremely outperformer of gold in comparison to Nifty 500 or equity, right? So Nifty 50. So it has been an outperformer, but the moreover both characteristic over here is that buy and forget, and then whenever you need, you see to it that you have it or not. In this case, ladies are very strong that हम बेचेंगे नहीं, but male are generally very much clear that कि यार पैसा आएगा ना तो हम बेच देंगे। I'll give you an example. We bought a property. So we were thinking on how to prepare the planning of money, and my wife came down and told that मैं मेरा गोल्ड नहीं बेचूंगी या कुछ भी हो जाए। Now just imagine, हम ऐसा सोचते थे हम कभी इक्विटी नहीं बेचेंगे। My wife was very clear that गोल्ड नहीं बेचूंगी मैं। So that's how gold is been there in every family and every house. But now this is the most important thing. There are only two types of people in the markets. One is story and intuition, and data and logic. So this is not about 𝗘𝗫𝗶𝘀 PMS, but it has been taken from the website. So that is the reason I'm showing you. Story and intuition is the something which it works for a shorter period of time, but doesn't work for a longer period of time. And this is again very interesting. Every year we see that market has dropped more than 10% of time every time. So every year on an average, except 4 years, in last 45 years, market has dropped more than 10%. So the point over here is that if the exits are not very clear, the pain of investing is going to be for a very, very longer period of time. And this I have taken data from 1980s, right? So every year we saw on an average market to go more than 10%. On an average, it is more than 10%. But if you see year on year, calendar year, it is 10% down. But the whole interesting point again comes back is that every time when market recovers from the bottom to its near new high, the sector changes. Now there are new sectors which makes money. If you see in 2020 when it was PSU Bank and Metal, then it came real estate and auto. Today, right now, we are seeing NBFC to make money, power to make money, BFSI to make money. But if you see when did banking made money, financial services made money lastly, it was 2018, the highest money which made in the top sectors, right? So and then it was in 2005, and then we saw basically the top two sectors was never financial industry. So now इससे क्या मतलब होता है कि every time when market collapses more than 10% and when it recovers, your top sectors do change. Of course, when top sector changes, your top stock changes, and that's where exit mantra comes into play. So I'm not taking more of the time. So हमने ये जब चालू सोचा था, तब अब मैं सोच रहा था कि लोगों को ये फॉर्मूला दे दूंगा और लोग फॉर्मूला से बना लेंगे। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स को भी अप्रोच किया कि क्या आप ये फॉर्मूला आपकी वेबसाइट में डाल दोगे, हमको बनाना नहीं है। तो लोगों का हेजिटेशन होता था कि यार ये हम करें, बिकॉज सबका विजन सेम नहीं होता था। और तब मैंने ये मूवी देखी थी जॉब्स। अगर आपने नहीं देखी है, आई वुड रियली अर्ज यू टू वॉच दिस मूवी। अब शायद यूट्यूब पे फ्री मिलती है। ये पूरा नहीं मैं जाऊंगा, मैं यहां से जाऊंगा। ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। empowering. तो स्टीव जॉब्स और उसकी पूरी टीम ने जब फर्स्ट मदरबोर्ड बनाया, तो वो लोग एक डीलर के पास गए बेचने के लिए है मदरबोर्ड, और ये पूरा कन्वर्सेशन वहां का है। The rest. Result. As for 50 computers, that's keyboards, cases, monitors, and power included, not just boards. Just boards. Excuse me, just boards. These are state of the art. These
The logic boards alone are, nobody's making anything like this. Then what, how dare you? How dare I you? think what my colleague is saying is that if you're not seeing the possibilities here, that is indeed one unbelievably kick-ass computer. Not to the consumer. Well, then maybe your consumer should start to learn how to operate, how to even work that. Listen, don't you think? boys, you sold me on a home computer. That's a keyboard and monitor. This is a board. Now, I'm sure this makes a very capable starter kit, but the everyday person, the kind of person that's not an engineer or in a computer club like you, they're not going to know what the hell this is. The average Joe doesn't want to build their own computer. They just want to buy it. They want to take it out of the box, plug it in, and have it work. Steve, are you listening to me? So this scene changed my whole life. कि हम सोचते हैं कि ये हम दे देंगे और लोग कर लेंगे, पर people are not that intelligent to understand how it works. And for that, ladies and gentlemen, we created Exit Mantra. The whole concept of Exit Mantra was to make people hold their performers and exit their underperformer. So I would be very happy for the first session of my life to tell you what it is all about, Exit Mantra. So welcome everyone to Exit Mantra. This is the page you see in on your point. I'll just log out myself to show you the whole context of how it works, so it's easy. So for example, if you've not done a sign up, which is free, you open a stock, let us say called Reliance Industry. You may see certain stuffs about Reliance Industry, a price, ATH profits, outperformance above exit price, but you may not see the internal aspects of it. So for that, it's mandatory to either log in by a Google or a WhatsApp. Because if you do by Google or if you do by WhatsApp, both integrations we have done. If you put a mobile number, the good part is that anytime there is a change into a stock, you will get it into your WhatsApp and email. So if you want a WhatsApp notification, you will get it. If you want an email notification, you can get both of it. Now, once I have logged in, I am open to access everything and anything. I'll go first with one of the most innovative thought we have kept. A lot of website has this, but our is very different. And this is the whole point of understanding market kahan hai. So market is into panic. हमने 4 जोन दिए हैं: panic, pessimism, optimism, euphoria. So आज की डेट में 65% of the market is into optimism point. And we also kept chart to show you that how it has happened. So with the date management, if you see in April 2016, the market went into a euphoric position, and then we came down, we came down, we came down, and by 2000, from February to March, we were into pessimism, and then again we came to optimism. सो लोग बोलते हैं ना कि कभी मुझे प्रॉफिट बुक करना है, नहीं करना है. If you only want to see the data where market is going, this is one of the best indicator we have created. And of course, this indicator will have more and more positioning around the period. And how it works? So if total Nifty 750 stocks is above 70% of bull zone and 30% below bear zone, it's euphoria. 50 to 70% is optimism, pessimism is 30 to 50%, and panic is below 30%. Panic, I think so there will be only 2 times general panic आया होगा, 2008 में और एक COVID situation में. There will be in last, I think so, 15-20 years. But market generally slides between euphoria, optimism, pessimism, and that's where interesting. Generally, pessimism comes when market corrects nearly about 10% and more, and optimism does when market recovers to more than 10% and more. So this is a very good indicator. Doesn't move every day majorly,
बट स्पेसिफिकली ये चेंज होगा जब क्वार्टर रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे. दैट्स वेयर देयर विल बी अ ह्यूज चेंज इनटू द मार्केट मीटर. नाउ वी कम इनटू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. So this is a line from Kenny Rogers, the Gambler song, that you need to know when to exit, when to replace, when to add, and when to hold. We are not in story and intuition, as I already told. We are into purely data and logic. If you are like my father investor, buy, forget, then I think so this will not make sense for you. But if you are like me, who is looking forward for buying the performers, like Sachin is my favorite, but Virat Kohli was again my favorite, but today I need to look forward for a Shubman Gill. So that's where, if you're looking forward for, then I think so this website makes a lot of sense. What should not you should not expect? We don't give any buy recommendation. We don't give target price. We don't give short-term recommendation. We don't give any trading ideas. We don't give any ad promotion, and no financial advice. This is what we don't do. It's a pure DIY model, that is do it yourself. तो आप अपने स्टॉक अपने स्ट्रक्चर से कर सकते हो. तो जब हमने ये बनाया तो मेरा विजन एक ही पॉइंट पे था कि मुझे सिर्फ कब निकलना है वो मुझे सॉरी लोगों को बताना है, और कुछ नहीं लोगों को बताना है, सिर्फ कब निकलना है. तो हमने क्या किया था, सिर्फ स्टॉक का नाम और एग्जिट कब करना है. एंड देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड पीपल नियर डाउन टोल्ड मी दैट रोहन, ये तो कोई काम का ही नहीं है मेरे लिए, कि कब निकलना है वो मुझे जानना ही नहीं है, पर अभी मुझे स्टॉक का क्या करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मुझे तो रिलायंस 1500 है, तो मुझे बोले 1100 में तो जब आएगा तब बेच देना, तो वो मेरे लिए कुछ काम का ही नहीं है. एंड दैट इज द रीजन वी रिवाइंड द होल प्रोसेस ऑफ एग्जिट मंत्रा and created this 4 ratings: add, hold, replace, and exit. So add is when there are 3 credentials. So I'll go first for 3 credentials and then come back. So हमने तकरीबन 15-20 साल से क्वांट की स्ट्रक्चर में 500 चीज हमने देखी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसमें से कर्टल करके हम 3 चीज पे आ गए. ऑल टाइम हाई प्रॉफिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर और के कंपनी बहुत अच्छा कर रही है. एक दूसरा कि कंपनी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड दैट इज निफ्टी 500 फॉर अस. कि भाई निफ्टी 500 10% बड़ी है, तो ये 11 बड़ी है, तो इसमें इसके पास स्टीम ज्यादा है. थर्ड कि ये जो हमारा एग्जिट प्राइस है, जो हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल है, उसके ऊपर चल रही है, तो ये पॉजिटिव है. ये 3 का मिश्रण हो जाए तो ये एक कंपनी एक एड रेटिंग में आती है. अभी आप बोलोगे रोहन बहुत सारी कंपनीज आजकल ये देती है, इतना क्लैरिटी से कोई रेटिंग नहीं देता है. सब अपने हिसाब से रेटिंग देते हैं, स्वॉट देते हैं कि ये कंपनी में अच्छा फंडामेंटल है कि नहीं नहीं है, पर वो उससे आप एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि आपको करना क्या है. And that is the reason we came to clarity. And again, going back to that Steve Jobs point, to make it simple, silly was what our point was. So if the score is 2, the rating comes to hold. Company बुरी नहीं है, पर अभी hold करो. If the stock is 1, is replace, and if the stock is 0, it is exit. Now replace is कि भाई आपके पास ये कंपनी है और आपको और बेटर कोई कंपनी मिल रही है, तो उसको स्वैप कर दो. और अगर ये 0 है तो आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है, you should exit out this company, right? So this gets updated every weekly. Now though it gets updated every daily, it's all automized, but generally it generally changes on a weekly basis. Now ये हमने स्टॉक का प्राइस लाइव नहीं रखा है, स्टॉक का प्राइस ईओडी रखा है. तो जब आप मंडे मार्केट खोलोगे तो आपको 15-15 का ही भाव दिखेगा. Why? Because we don't want you to take decisions on the market movements, but generally on the decision of the current on the last close price. So now I'll just give you a brief. Here you will get price, here you will get zone. So zone also is there. There are 3 zones. The third we have introduced, of course, bull, when the stock on quant says all green signal. Pig, now bear is all red, and pig is not positive or not negative, it is consolidating. So now we have 3 zones in the portfolio in exit mantra.
and of course you will get the score. Also you will get when it is changed. If you see, we have made it so transparent to tell you that कौन सी डेट पे चेंज हुआ है. I'll give you an example of a company called Mutut. दिस ऑल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, तो प्लीज ये बाइंग पर्सपेक्टिव से मत लीजिएगा. सो और इसमें मैंने बोला आपको एड रेटिंग भी मिल जाएगा. और यहां से हमने और एक चीज की कि ये जब से चेंज हुआ रेटिंग, तब से स्टॉक कितना बढ़ा है और कम हुआ है. सो ये जब से चेंज हुआ तब ये स्टॉक 20% अपने प्राइस से बढ़ा है. और यहां पे आपको एग्जिट प्राइस भी मिल जाएगी कि कुछ गलत हो जाए तो कौन से भाव से आपको निकल जाना है, अगर आपको निकलना हो तो. सिंपल 3 चीज, ऑल 3+ हो तो 3 कैटेगरीज अप है. अबाउट थोड़ा डिटेल अबाउट द कंपनी के कंपनी करती क्या है. सो हमने बहुत सारा कोई फंडामेंटल पॉइंट नहीं रखा है. फंडामेंटल के लिए स्क्रीनर अमेजिंग है, पर ये एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए है. हमारी टीम ने बात करके वी हैव नाउ एडवांस चार्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेटेड टू इट, एंड इट्स ऑल लाइसेंस वर्जन. तो आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग व्यू, उसमें चार्ट भी देख सकते हो, ईयरली जो जनरल ट्रेडिंग व्यू में आते हैं वो भी आप कर सकते हो. एंड दिस इज हाउ इट हैज वर्क. एंड यहाँ पे हमने पूरा मैन्युअल दे दिया है कि ये कैसे पूरा काम करता है. सो कभी भी आपको देखना है तो आप पूरा इन डिटेल जा सकते हो. सो नाउ दिस इज वन ऑफ द first picture of a stock which has moved or which has not moved. Like for example, let me take you to a stock called मुझे तो नहीं पता है कौन सा स्टॉक मैं लूंगा, पर बिकॉज ये क्या एक वो हो बी जाता है बी जैसे एस BSC या BSc आया है. देखो अभी आप बोथ ऑन द सेम पेज. So BSc is very interesting. BSc is 18 and the change has been from 51%. The stock has changed. जो अगर मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये रेटिंग चेंज नहीं होता है तब तक बेचना भी नहीं, वो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और वो भी ये हेल्प करता है. आप सोचोगे कि रोहन ये 2700 का स्टॉक है, 1200 का तो एग्जिट प्राइस देगा, पर बिकॉज BSc हैज रैलीड वन वे, जब भी ये BSc थोड़ा कंसोलिडेट होगा तो ये एग्जिट प्राइस भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा. नाउ इफ यू वांट टू पुट इट इनटू योर ऐड टू वॉच लिस्ट, अभी आपको शेयर करना है ये चीज अपने दोस्त के साथ, सोशल मीडिया के साथ, तो आप पूरा इसको शेयर कर सकते हो कि भाई BSc क्या लग रहा है. जैसे हमको बहुत लोग पूछते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपको बजाज, फॉर एग्जांपल आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको. जैसे फॉर एग्जांपल ओला, किसी ने अभी मुझे रिसेंटली पूछा कि ओला क्या लग रहा है आपको, तो मैं कुछ नहीं बताता हूँ उसको कि भाई ये तो एग्जिट है, शेयर है, तो भाई शेयर कर देता हूँ उसके साथ कि ये चीज है, आप अपने हिसाब से देख लो. अगर मुझे इसको वॉच लिस्ट में डालना है कि जब भी ये फिर से बाय में आएगा मुझे जानना है, आप कुछ नहीं, सिंपल अपनी वॉच लिस्ट बना दो, आपका सेव हो गया. अभी जब भी कुछ भी चेंज होगा ये स्टॉक में, ये एग्जिट से रिप्लेस में आएगा या होल्ड में आएगा या बाय में आएगा, आपको ईमेल नोटिफिकेशन, और अगर आपने व्हाट्सएप नंबर डाला है तो आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी आएगा. एंड एज ऑफ नाउ दिस इज फ्री ऑफ चार्ज. और ये क्यों है बेयर मार्केट में, बिकॉज उसका प्रॉफिट डाउन है, आउट परफॉर्मेंस डाउन है, और एग्जिट प्राइस डाउन है. अभी एक यहाँ पे एक सोच है कि लोग बोलते हैं कि रोहन ये तो मैं लेके नीचे में कर सकता हूँ एवरेज, समटाइम इट इज गुड पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट वर्कड. तो ये जब भी फिर से एड में आए, ये 43 पे आ सकता है, 50 पे आ सकता है, 100 पे आ सकता है, मुझे नहीं पता है, पर तब आप करोगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी मच फास्टर देन इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड एट 43. अगेन माय पॉइंट इज दैट कि ये एक स्टॉक के डिपेंडेंसी से आप नहीं कर सकते हो जज. यू हैव टू सी ऑल द स्टॉक पोर्टफोलियो एंड देन कम टू द पॉइंट. Now we have now kept one thing very interesting, and you have now all stocks. So जितने भी स्टॉक ट्रेडेड है सब स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है. हमने स्टार्ट किया था निफ्टी 500 स्टॉक से, आज की डेट में BSE NSE के जितने भी ट्रेडेड स्टॉक है सब यहाँ पे लिस्टेड है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, वॉच लिस्ट जो मैंने आपको बोला, तो आपने अगर यहाँ पे वॉच लिस्ट कर दिया है, आप 2 वॉच लिस्ट बना सकते हो, और यहाँ पे कर दिया है, आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक क्या है. आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर दिया तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा. अगर आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, जो जैसे मैंने बेल आइकन में कर सकता हूँ, एक मिनट सॉरी, मेरा सेटिंग्स ऑफ है. सो आई गो टू माई सेटिंग
Your details email notification is on, just give me a second. So any which ways, हाँ सॉरी ये हो गया। तो ये जितने भी स्टॉक का मेरा आएगा, जैसे मुझे नहीं इसमें नहीं चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री का नोटिफिकेशन, मैं ये बंद कर दूंगा तो इसमें नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। सो आप दो वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और दो वॉच लिस्ट में कभी भी कुछ भी आए आप देख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर लूंगा बाद में, फिर हम बात करेंगे। और ये हमने क्रिएट किया है फिल्टर। तो अभी आपको देखना है कि यार स्टॉक रोहन कौन से बाय आ रहे हैं, तो ये भी अपने वर्कआउट कर लिया है। दिस इज व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस जस्ट, कि आपको इंडेक्स भी मिल जाएंगे, कि आपको अगर आज की डेट में देखना है कि निफ्टी ऑटो में ऐसे कौन से स्टॉक है जो बुल जोन में है और जिसका स्कोर 3 है, तो आपको आ जाएंगे कि ये 4 स्टॉक है जो 3 स्कोर पे है और ये यहाँ पे बुल जोन में है। तो ये निफ्टी ऑटो के ऐसे स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ये रिस्क टू सीएमपी क्या है कि आज की आप एग्जिट प्राइस से सीएमपी से 3200 रुपए से 2300 रुपए का एग्जिट प्राइस गिनो, तो आज की डेट में ये 28% के रिस्क पे चल रहा है अगर ये एग्जिट आ जाए तो। और अगर आपको कम रिस्क वाला लेना है तो आयशर मोटर 8% के रिस्क पे चल रहा है, मारुति 12% के और टीवीएस 28% के। यहां से भी आपको डायरेक्टली ऐड करो तो आप डायरेक्टली वॉच लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि रोहन कौन से स्टॉक है जो बेयर में है, कि भाई यहाँ पे यार ऐसा है कि ये कंपनी मुझे ऑटो में से निकाल देनी है और जीरो स्टॉक है, तो भाई कोई नहीं है। रिप्लेस में से है कोई? हाँ वो भी नहीं है। होल्ड है? ओके, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो बेयर मार्केट में नहीं है, शायद पिग मार्केट में हो सकता है। तो स्कोर में से कोई रिप्लेस में है तो ओ ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्साइड इंडस्ट्री और टाटा मोटर्स, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको रेटिंग 1 पे है और रिप्लेस करने की इंडिकेशन आपको दे रहे हैं यहां से। तो ये जो डिफरेंस भी है वो ये डिफरेंस पे है, जहां से रेटिंग आया वहां से स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या हुआ। अभी मैं जैसे जाता हूं निफ्टी टोटल मार्केट्स में और मुझे देखना है कि कल कौन से स्टॉक थे जो नया पॉजिटिव में आए हैं। तो मैं इसमें जाऊंगा, 3 में जाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने स्टॉक है जो कल मार्केट में पॉजिटिव 3 नंबर्स पे आए हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक, मैनकाइंड फार्मा, रिलायंस, हिमाद्री, पावर मैक और एक्सॉन मोबिल। तो ये 5 स्टॉक या वॉट स्टॉक पे मैं फोकस कर सकता हूं। मैं ऐसा ढूंढना चाहता हूं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो बिग मार्केट में है, बेयर मार्केट में है और जीरो पे कोई आया है। तो हाँ, कोहेंस लाइफ साइंस, मुझे नहीं पता ये कंपनी क्या करती है, ये आज की डेट में पिग मार्केट में बेयर मार्केट में आया है। शायद ये मेरे हिसाब से आईपीओ का स्टॉक है, पर आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट प्राइस। अच्छा दूसरा, कि जहां पे भी बेयर होगा वहां पे एग्जिट प्राइस नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये एग्जिट प्राइस से नीचे ही चल रहा है। तो ये फिल्टर हम ज्यादा से ज्यादा इंट्यूटिव कर रहे हैं और इसमें और अमेजिंग पार्ट ये कर रहे हैं हम, कि हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल दे रहे हैं आपको। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक देखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, फिनेंशियल में ऐसे कौन से स्टॉक है जो लास्ट मंथ में बेयर बुल मार्केट में आए हैं विथ 3 स्कोर, तो भाई एक्सिस बैंक है। मैं हम निफ्टी 500 ये निफ्टी टोटल मार्केट्स कर रहे हैं टू मेक इट पॉइंट। तो कितने स्टॉक है? तो इतने सारे स्टॉक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दो, आपके पास फाइल रेडी हो जाएगी। तो देन यू कैन यूज इट वाइजली फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। दो दो दिन तक हमारे पास ये इंडेक्स नहीं था, ये इंडेक्स में भी हम नए नए ला रहे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल माय वेरी डियर फ्रेंड कॉल्ड मी एंड टोल्ड रोहन फार्मा में न्यूज आया है। अभी मुझे फार्मा के स्टॉक देखने हैं कि कौन से स्टॉक पॉजिटिव है कि मुझे ले सकता हूं, तो मुझे तो पता ही नहीं है। एंड दैट वाज द रीजन दिस फीचर वाज अप्लाइड। एंड टुडे आज की डेट में 1 मंथ में ग्लेनमार्क फार्मा और मैनकाइंड फार्मा यहाँ पे आया, और ग्लेनमार्क जब से आया है तब से 14% प्लस भी हो गया है। एंड दैट इज हाउ दिस वाज क्रिएटेड। सो ऑफ कोर्स आई विल टेक योर क्वेश्चन, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेल यू द one of the most intuitive feature, and that is portfolio. And the portfolio is amazing. We are in the process. We have got node from 𝗬𝙤𝙠,
we are in the process of going forward for all the 18 brokers integration. तो आपका broker account से आपको आपका डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगा मे बी इन दिस मंथ. बट एज ऑफ नाउ आप मैन्युअली स्टॉक को ऐड कर सकते हो. स्टॉक को ऐड करके आपके पोर्टफोलियो में आपका रिटर्न्स बन सकता है. ये मैंने एक रैंडम पोर्टफोलियो मेरा बनाया है, इससे पीएनएल से मत जाना. आपको पता चल जाएगा आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है. जैसे मेरे 7 होल्डिंग्स है, इसमें से 3 स्टॉक बुल जोन में है, 2 स्टॉक बेयर जोन में है, 2 स्टॉक पिग जोन में है, और कोई अदर जोन हम कभी लॉन्च करें तो वो 0 है. तो आपको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, महिंद्रा मुझे बेचना नहीं है, पीएलएस बेचना नहीं है, वोडाफोन को मुझे रिप्लेस कर देना है, ओला इलेक्ट्रिसिटी को एग्जिट कर देना है, मुथूट फिनांस को ऐड कर सकता हूं, ईज माई ट्रिप को एग्जिट कर देना है, और इंडियन ऑयल को मुझे रिप्लेस करना है. You will get exact concentrated understanding on what to do with what the stocks you have. Now again यहाँ पे हम टाइम फ्रेम से भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपको अलर्ट्स भी डाल दिए हैं कि अगर आपको महिंद्रा के अलर्ट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे, नहीं चाहिए आपका अलर्ट्स बंद हो जाएगा. तो आपको वो अलर्ट्स भी आपको दे दिए हैं. यहाँ पे आप अपडेट आपके होल्डिंग कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो होल्डिंग. पर ये तो एक मैनुअल पोर्टफोलियो हो गया. पर इन 1 month वी विल गिव यू ज़ीरोधा इंटीग्रेशन, कि जहां पे आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आईडी पासवर्ड और ओटीपी डालना है. आपका पूरा पोर्टफोलियो का इंटीग्रेशन इन 2 minutes आपके डेस्कटॉप और मोबाइल के सामने मिल जाएगा आपको. यहाँ पे आप जितने भी आपके स्टॉक चाहिए वो ऐड कर सकते हो. और यहाँ पे और वी आर कमिंग अप विथ अ न्यू पीडीएफ रिपोर्ट, कि आप पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड करो तो आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू एक पेज में मिल जाएगा कि आज आपको क्या करना है. और यहाँ पे आपको पीएनएल भी मिल जाएगा. मेरा कौन सा स्टॉक है जिसने इतना बड़ा लॉस किया है, ये मैंने ऐसे ही मैनुअल एंट्री की थी. ओ 85% ईज माई ट्रिप ने किया है, तो वो मैंने नंबर अलग डाल दिया होगा. तो यहाँ पे आपको करंट वैल्यू, पीएनएल क्या है, रिमार्क्स आपको क्या है, वो सब आप कर सकते हो. और ये एवरी वीक वी आर इम्प्रूविंग दिस यूजर एक्सपीरियंस टू मेक your experience of investing more better. Also you can subscribe for a newsletter. हम कुछ ना कुछ नया लाते हैं तो अपडेट करते रहते हैं कि ये नया लाए, ये नया लाए, ये नया लाए, to give you more understanding of how it works. So ये हमने पूरा स्ट्रक्चर ये पॉइंट से किया है to give you a real understanding of कि ये स्टॉक में कौन से करने चाहिए, स्टॉक में कौन से नहीं करने चाहिए. आप यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हो. और अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू पोर्टफोलियो, मुझे नहीं पता ये कैसे, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 मैनुअल है, एक मैनुअल पोर्टफोलियो कर सकते हो और ऑटोमेटिक डेली सिंक आप कर सकते हो काइट ज़ीरोधा के साथ. एंड वन काइट ज़ीरोधा इज बीन डन. वी आर कमिंग अप विथ नियरली अबाउट 17 ऑनलाइन ब्रोकर्स to work with. So this is how we have created one of it. Also we are a SEBI RA registered license holder. So this is also SEBI structured clear. तो हम जब भी आप नया लॉगिन करोगे आपको टर्म्स एंड रेगुलेशन आएगा जो सेबी का है, टू मेक इट थिंग्स मोर क्लियर ऑन द सेबी साइड ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड. आई एम श्योर आई वुड बी मिसिंग 2-3 points here and there, but I'm very proud of what we have done, and this is just the starting. I'm sure again going back to what Apple had done at that point of time looked very weird, but over the period of time what Apple has been created, and we would be very happy that we have the footsteps of one of the most innovative fintech SaaS based investing platform what we have created. We don't want to be screener, we don't want to be tijori, we don't want to be anything which is other. We want to only focus on our criteria of giving investor clear model of when hold on the performers and exit or replace the underperformers. That's it for me. I would open the floor for question and answers. So if you have any question, you can raise your hand, you can put it into your chat, whatever you can do. I'll try to answer most of it what it is possible. Also I would let you know that आपका यहाँ पे ऐप sorry, I missed out. I'm very sorry. Before taking this point, let me show you what are the things which we are upcoming up with.
as I told, we are upcoming up with all portfolio brokers integration. We are coming up with something very unique called crowned stocks. So now आपके पास यहाँ पे 5 स्टॉक्स आ गए हैं जो ग्रीन जोन में है, पर वो 5 में भी कौन से स्पेशल स्टॉक्स है, तो उसको क्राउन देंगे हम कि दिस आर द मोस्ट स्पेशल स्टॉक्स यू कैन फोकस ऑन. वी इन दिस ईयर वी विल बी कमिंग अप विद एन मोबाइल ऐप. एज ऑफ नाउ आप डेस्कटॉप पे जाके मोबाइल में डेस्कटॉप से एग्जिट मंत्रा खोल के आप डेस्कटॉप साइट डाउनलोड कर सकते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू मेरे मोबाइल में, इफ आई कैन, एक मिनट में ब्लर बंद कर दूं. सो आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में मैं एग्जिट मंत्रा का ऐप खोल सकता हूं. तो आप डेस्कटॉप में जाके आप एग्जिट मंत्रा का ऐप खोल सकते हो. तो दिस इज एन ऐप, आप मोबाइल में खोल सकते हो. तो पूरा एग्जिट मंत्रा का ऐप और जितने भी फीचर्स आप वेबसाइट पे देखते हो सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो एक ये है, वी आर कमिंग अप विद अ मार्केट मिरर पेज, जहाँ पे आपको पूरा पेज में मार्केट में क्या एक्टिविटी हुई है, मार्केट में कौन से स्टॉक ने बहुत आउट परफॉर्म किया, बहुत अंडर परफॉर्म किया, वो भी मिल जाएगा. We are putting a better filtration of stocks to make the experience more better. We are coming up with the first allocation calculator of one of its kind जो कोई वेबसाइट में नहीं है. It's not about what you buy, it's also about how much you buy. So आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके पोर्टफोलियो पे कितना परसेंट होगा, वो हम ला रहे हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया. We are coming up with some lot of premium features and we are coming up with structured APIs for utilizing APIs in different website. So this is the whole plan of 1 year. Right now we have nearly about 10,000 users on our platform in a very minuscule time of 2 to 3 months. We are looking forward for to cross 1 lakh user by this financial year, and we all as a turtle, we sincerely wish that anybody who wants to contribute in this in the whole ideation, we are welcome to take you in our team, not on the certain some consulting team, one's idea team, and make it more better. So if you're really interested to make contribution to this, please let us know. We will make sure that we can hear you very well. So before ending up, thank you for listening. We will go forward for question and answers. So, there are 2, 3 questions. I will read out the question. So, as you said, Kajal, can I go? I'll be fast. okay. Yeah. So as you said, after every fall, the top 2 outperforming sector changes. How can we identify? मुझे नहीं पता है. You can't identify this on the website. You can only identify that which are the stocks which are popping up in that sector at 3 number. So जब मार्केट मार्च से टूटा था और वहां से कवर हो रहा था, all the NBFC stocks started to pop out. So that is where आप ऐसा समझ सकते हो कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा. मेरा एक देखने का पॉइंट ये है कि सेक्टर में जो सेक्टर ऑल टाइम हाई करता है वो जनरली आउट परफॉर्म करता है. नीरज पुन्या, on a lighter note, why did you choose a pig icon? Please, can you change the animal for denomination place? You can change rabbit. Yeah, it's a Neeraj never thought on the point, but generally pig is a denomination used in US for markets which are not bull and markets which are not bear. Pig is a dirty face. Pig are generally dirty, except Pega pig. Pega pigs are cute. तो दैट इज द रीजन पिग रखा है. हमको नहीं लग रहा है कि कोई उससे कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज बुल और बैर भी एक एनिमल है. सो टर्टल तो नहीं रखेंगे फॉर श्योर, बट मे बी रैबिट वी कैन थिंक फॉरवर्ड फॉर. थैंक यू फॉर दैट पॉइंट. Sir, how to connect you? You can write me at rohan@turtlewealth.in, or you can surely go to our website and connect for sure. Abhishek Patil, Turtle performance last, there is no session. Yeah, Abhishek, we only on Turtle PMS, it's not the right platform to talk, but because your question, we do keep. Last quarter we didn't keep because dates were not getting onto the point, but this quarter we have Turtle review session for sure. How we decide exit point? Sagar, our exit point is our proprietary, that proprietary क्या बोलते हैं, हमारी मैजिक फॉर्मूला है. वी वोंट रिवील इट, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग, ऐसा कुछ बहुत कुछ खास नहीं है. हमने 2-3 चीज को मर्ज करके कुछ स्पेशल बनाया है. थैंक यू जयदीप भाई फॉर लविंग एग्जिट मंत्रा. हाउ मेनी स्टॉक्स कैन बी एडेड इन द वॉच लिस्ट? काजल, कितने स्टॉक ऐड हो सकते हैं वॉच लिस्ट में? So 25.
Yeah, so 25 stocks can be Vinod bhai can be added in the watch list. If you want more, you can create a second watch list, but 25 is the size. Onkar, do you have any plan of entry mantra? So exit mantra is actually why exits are very important. But if you see, ये entry mantra भी है because you know because it tells you that कि कब entry भी करना चाहिए stock में. You take charge for this best service. As of now, Sagar, we don't take charges, but very soon we will be coming up with a premium feature services once we cross maybe 50,000 users or so. Mr. Datta, how do we know the change to add on daily basis? I didn't understand, Mr. Datta, what you were So trying we to get tell. users Yeah. get a mail and WhatsApp notification. हाँ, सो जब भी कुछ चेंज होगा तब आपको अगर चेंज आएगा तब आपको व्हाट्सएप और ईमेल दोनों नोटिफिकेशन आएगा. ओनली इफ आपका व्हाट्सएप नंबर है. दूसरा, ओनली इफ आपका बेल आइकन में पॉजिटिव हो. How can I contribute for development, process development? Sanjay, you can write to us. We can surely have an offline meeting and talk about it. Sunny, what is the logic? Find the exit price or the bull logic. Already we have talked for it, Sunny. You can go forward for it and see in how it works. Rinkesh, as I'm option trader, should I use this change of trend of the stock as trading in option strategies? Rinkesh, we have not back tested it that it works in options or not. So sorry, I cannot comment on it. Arpit, more clarity please on how pink changes to red and green. Arpit, pink changes to red and green when the number changes. If the number is 1, ये तीन में से सिर्फ एक है तो ज्यादातर पिंक आएगा, और ये 2 या 3 होगा तो ये फिर पिंक से रेड, और ये फिर लोअर होगा तो रेड होगा. Nimish, can you add option of uploading portfolio? Yeah, Nimish, we are working on it for uploading the portfolio. Honestly, there are a lot of CSV file से करना पड़ता है, ये करना पड़ता है. But generally, we then decided that हम broker integration ही करेंगे rather than uploading the portfolio. Brijesh, how mankind pharma change rating because it's in low phase? No, it can mankind pharma is not in low phase. You can again see to it for sure. Just give me a second. Let me see to it. We will not go for stock specific, but yeah, Brijesh, we can surely talk offline for the same. Just give me a second. Yeah. Good afternoon. Currently, I'm using it. Can you add market capitalization criteria in the filter? Yeah, Suraj, we are adding lot of stuffs into filter. We will surely make sure that we will come out with market cap point. But generally, you don't need market cap because आप अगर देखोगे तो निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी टोटल मार्केट तो आ ही गया है. तो जनरली आपके पास लार्ज कैप हो तो आप कर सकते हो, एंड वी आर कमिंग अप विथ मिड कैप स्मॉल कैप ऑल्सो. सो जनरली आपके मार्केट कैप टैप हो जाएगा. एक्चुअली मार्केट कैप से करना उसमें डेटा बहुत यूटिलाइज हो जाता है. तो एज ऑफ नाउ हमने फिल्टर सेक्टर और इंडाइसिस से रखा है. मार्केट कैप से रखना अभी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है. Jainam, sir, can we find entry price of the stock? Of course, you can find Jainam entry price of the stock. Let me show you how it works. So let us say you go to a stock called MCX. तो MCX कौन से प्राइस पे एंट्री हुई है, चेंज सिंस, और ये 5,000 पे बाइंग आया है उसका 4986.6. तो आप वहां से देख सकते हो फॉर श्योर. Would like to collaborate. I am an AP. Yeah, Pratik, for sure you can reach out to us. Kamal Mehta, what is the difference between exit and replace? Oh, it's a very good question. Replace is you hold, but when you get a better stock, move to it. Exit is you get better stock or not, don't get better stock, better you exit out of it. So that's a difference. Arpit, allocation would be as per conservative. Yeah, allocation would be as per the risk parameters of what you want to have, for sure. So this is what we are working on. Brijesh, there is a good book. It's not what stocks you buy, it's when you sell that counts. Okay, Brijesh, we will take a note on it. Kajal, if you can just take a note of this book, Okay. we can see that what we can integrate from the author's point of view. Sagar, sir, it's in the system you are add in all the high stock.
Yeah, that is how it works, Sagar. If the stock is rising, if the outperformance is rising, and if the profits are rising, it would be all add. Chetan Mystery, how can I set up weekly notification as daily? It's too much, and Sunday summary is really great way. Chetan, that can be a good feedback for us. Kajal, can you please note it out? We can give Okay, a sir. weekly feedback of the point. Chetan, we will surely work out for it. Snehal, hi, how are you? Rohan sir, this is super product which has turned out so amazing from an idea of yours. Really something very fascinating. Thank you, Snehal. You have always been a great appreciator of our work. Sir, any plans to add ETF? Jaideep, we recently, when we started, we added ETF. What happened was that ETF doesn't have a profit. Now the problem is that the whole dynamics goes for a toss because वो तो पैट तो करता नहीं है. So हम ETF में सोच रहे हैं क्या हम ऐड कर सके, but that's the plan on the cards to add ETF for sure. Kunal, can you tell about your book at the cost? Kunj, you can write it to us. We can send you a courier. There's no cost to it. Falguni, loved. Hi, Falguni, I'm very happy you have joined. Loved the idea of exit mantra is very simplified. Thank you, Mr. Da, Virat Singh, if I have pronounced it right. Sir, any plans to come up with educate person to enhance? No, Mr. Singh. No plan of giving an education for for money. I think so. Education for money is like Steve Jobs selling giving an education how to create motherboards to people who don't know how to create a motherboard and expecting them to create a motherboard. Now we have been into the business or the ideation of giving the computers to you and making most of it. So yeah. Sutanu Datta, can we have the recorded webinar? Yeah, of course, that will be shared in the group. Chetan Missi, add index, that is what we are going to do. Commodity Sagar, still a bit of far point of over here, but somewhere in the future for sure. Kunj, so should we add and break out if the score shows 3 or when it's near to risk? No, it depends on you, Kunj. Generally, if the score is 3, the first time when it comes 3 is the time to add in that stock. Chetan, I am using it for the first day and if I got WhatsApp message and it's a great way to give back to community. Thank you, Chetan bhai, for doing it. Uh, Jignesh, all micro cap and all the stocks Jignesh has been listed. Jamish, what is the criteria of our stock addition? कितना time का traded value होना चाहिए? Or Kajal, if you know that. Around, okay, Jamish is coming. Yes, sir. So currently we have the 4,700 stocks listed on the exit mantra. नो बट ये बाकी कौन से स्टॉक है जो ट्रेड नहीं होते हैं वो नहीं होते हाँ, ना. means के trading restricted or suspended stocks are not in the exit mantra. So 4,700 stocks are there in our in the list, but जिसमें ट्रेडिंग नहीं हो या कुछ सस्पेंड हो गया हो वो नहीं आएंगे. How to use it for pyramiding? You can use it for pyramiding. Generally, this is what is my perspective, is when a stock is in 3, goes to 2, and again comes back to 3. This is a very good time for pyramiding a stock. Sagar, all-time high profit, but which quarterly or annual? It's a TTM, last 4 quarter का average profit. No, not average profit, total profit. Kamal Mehta, I can connect with Zerodha if the number of stocks are more than 25, how it will be handled. No, I don't think so. Zerodha में 25 से ज्यादा स्टॉक का कोई लिमिट है. आपका कितना भी पोर्टफोलियो होगा, Zerodha से कनेक्ट करके वो आपको रिव्यू दे सकते हैं. अर्पित, if the margin of safety is reflected as risk to CMP still, higher the number is better. Yeah, you can tell or talk about it. Vijay, thank you. Thank you, Vijay bhai, for always being very good. Uh, Sir, can the transition of stock in case of hold status, that is either it is changed to hold or add? I didn't understand, man. Please write to us. And the last question, sir, please tell us the rule to for enter in the stocks. I think so. That is where we have shared how it works. So rule based आपको करना नहीं है, वैसे ये platform ही है जहाँ पे आप काम कर सकते हो. Anybody who wants to talk can please start the mic or can raise the hand. Vijay bhai, you want to talk? I'm just allowing everybody who has raised their hand if they want to talk. Uh, Sorry.
You can start talking. आपका माइक म्यूट पे है. You have to unmute your mic. I think so Sunny has done. Sunny? Yeah. Hello. Hi, Rohan. Yeah, hi Sunny. Yeah, Rohan, this is a very good product, but like I'm into some technical, like I want to know if is it possible, I can understand, like what is the logic behind, so where you find the exit price and this little bit of not overall logic, because No. then I get a trust, yeah, I get a trust, like whatever I'm doing, I'm not blindfolded, or like, you know, something that I can watch in my chart, or how you are Yeah, Sunny, see, it's very getting. simple. If you see all time high profit, आप कहीं से भी देख सकते हो कि कंपनी का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है कि नहीं. ठीक है. Okay, right. आउट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि ये निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. ठीक है. अबाव एग्जिट प्राइस, तो मेरा जो एग्जिट प्राइस है उसके ऊपर भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी आपको क्लियर हो गया. Okay, ठीक है. अभी एग्जिट प्राइस आया है, वो हमारी प्रोप्राइटरी फॉर्मूला है, और ये okay, फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड फॉर्मूला इन लास्ट 15 years ऑफ एवरी मार्केट. सो यू कैन रेस्ट अलाइन एंड क्लियर ऑन. बट ये सिर्फ प्राइस पे आधारित नहीं है, ये प्रॉफिट और okay. आउट परफॉर्मेंस दोनों पे डिपेंडेंट है. सो सिर्फ अगर, सॉरी, Combination of techno fund. यस, इट्स अ Okay, 3 कॉम्बिनेशन टू गो फॉरवर्ड फॉर. okay, okay. सो All right. यहाँ पे आप एग्जिट प्राइस सिर्फ हमारा है, बाकी तो ये दो चीज आपको कहीं पे भी कोई भी ऐप में, Right, ट्रेडिंग व्यू right, में फ्री right, मिल जाएगी. right, right, right. That I know, but right. Got. फाइन सनी. Yeah. Thank या, you. Thank थैंक you, यू. Ron. विजय भाई, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. हेलो विजय भाई, कैन यू वांट टू स्पीक? I have allowed everyone who has raised their hand to talk. Yeah, Rohit, Yeah, yeah, Mr. Gupta. it's a very good product. The thing I need to know that while the stock has changed from its position to add, in some it was in hold. Now it just changed to add on a daily basis. So I need to have give a notification for each of the stock. But if I get a ready-made of Nifty 500 stock, so whichever stock will go to the ad, I will get the notification. So how it can be possible? Yeah, Mr. Datta, Am we I are clear working in the on. point? Yeah. You're very clear to it. We are working on it, and you will get this feature very soon. Okay, So right. Thank you. we are 3 months old baby. So please be Okay, patient. right. Have patience Okay, with okay, us. okay, fine. Yeah, Thank you, Rohit. yeah, Rohan sir, Uh, Snehal here. yes, Snehal. Sir, just wanted to ask, is there anything from where we can understand the sector rotation over here from this website? Yeah, so we are thinking, I think so Janish came up with a very good idea of sector rotation. We are working on it. Actually, Snehal, anything which comes to us an idea, actually there are 3 phases of it. One is we thinking of how to make it simple and extremely with data decision, which works. Second, how to integrate on the website, which is easy to be used. And fourth, how much investor wants it to be done. So we have got the feedback. We will make sure how it goes. But simple point pe, any stock which are coming more on the third number, that category of stock, Okay. generally is the sector rotation. But we are working on it how to give a better sector rotation. Else everyone, like, whom I know in my WhatsApp group or in my company. So I'm sharing this with everyone and they are really appreciating a lot, and many of them had made an ID on it and they are actively using it. So it is really fantastic work what Turtle Wealth team has been doing it. So really keep up the good work. Thank you, Snehal, Thank for you. kind words. Suresh bhai, you had any feedback? Yeah, Rohan bhai, first of all, thank you for sharing this in great details. And as to all, I am an investor of Turtle. Now Yeah. I feel regret I have invested less amount. I should have known this before. I would have invested some more amounts. So, Yeah, Suresh bhai, when we took money, bet money,
You would be surprised. Exit Mantra valuation was zero in it. We didn't Right. take single valuation on Exit Mantra. Our valuer told कि आपको थोड़ा तो वैल्यू डालना चाहिए। हम तो मैंने बोला कि यार मुझे पता ही नहीं है कि ये आइडिया जनरेट भी होगा या नहीं होगा, बट नाउ इट लुक्स दैट इट कैन बी अ बिग थिंग टू वर्क फॉर। It's going to be a game changer in this investment industry. I can foresee that. Thank Not you. because I'm an investor, but if you apply a general logic and then foresee that we are going ahead of technology, or we are with the technology. That's great thing that is happening. Thank you. Thank you. For Thank you. always being so good to us. Thank you. And kudos to Team Turtle. Yes. All at Turtle. Thank you, Suresh bhai. Thank you. Yes, Sagar, or we end up in next 1-2 minutes. Anybody else? सर मैंने ये आपका मतलब पहले से ही एक इलन मार्केट में आपका ये प्लेटफॉर्म में देखा हुआ है, या मतलब जो आपका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में एंट्री का क्राइटेरिया मैंने देखा। एग्जिट का तो आपने बता दिया कि एंट्री का मैंने क्राइटेरिया भी वहां पे मैंने देखा हुआ है। तो अभी मेरा ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, जैसे हम यहाँ पे ये एड टू वॉच लिस्ट में मतलब हर रोज का देखते हैं डेली का कि ये स्टॉक है जो रेटिंग एड में हुआ है और उसका स्कोर 3 है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये आपका देखा मतलब ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है लेकिन ऑल टाइम हाई स्टॉक नहीं है प्राइस में। मतलब मैंने कई स्टॉक ऐसे देखे, मैं आपका ये सिस्टम लास्ट 40 से 45 दिनों तक मैंने ये ऑब्जर्व किया। मैंने हर रोज की एक्सेल शीट डाउनलोड की हुई है, तो मैंने कई स्टॉक में ऑब्जर्व किया है कि जो ऑल टाइम हाई प्राइस है मतलब जो उसका हाई किया हुआ उससे तकरीबन 20-25 या 30% भी अभी चल रहा है, फिर भी वो हमारे स्कैनर में स्कोर 3 और जोन बुल में है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, मतलब का ऑल टाइम हाई से कितना है ये? नहीं सागर, इसमें क्या है कि ये जो हमारा पिकिंग का क्राइटेरिया है वो हमारा पीएमएस का पिकिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है। बिकॉज मुझे 750 स्टॉक में से सिर्फ 15 स्टॉक ही पिक करना है, इसीलिए ऑल टाइम हाई प्राइस हम देखते हैं। यहाँ पे ऑल टाइम हाई प्राइस नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब रिवर्सल स्टॉक का आएगा एक टेक्निकल इंडिकेटर पॉइंट से वहां पे बाय आ जाएगा स्टॉक में, और ये एग्जिट प्राइस के ऊपर होगा, तो इसमें क्राइटेरिया है दैट हाउ इट वर्क्स। सो ये तब आ जा बाय आ जाएगा। बट नाउ द पॉइंट इज दैट ऑल टाइम हाई के स्टॉक में हम वर्कआउट कर रहे हैं टू गिव अ क्राउन टू इट। लेट अस से एमसीएक्स इज एट ऑल टाइम हाई, तो उसको आप क्राउन तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, पर इसका फंडा और आपने ईलन मार्केट में देखा है दैट इज अ बिट ऑफ डिफरेंट फॉर इट। सो आपको 15 स्टॉक पिकअप करने हैं तो मे बी ऑल टाइम हाई प्राइस वर्क्स, पर आपको कुछ भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सुजलॉन है, तो सुजलॉन का तो हाई 1300 रुपये या ऐसा कुछ है, तो वो तब बाय आएगा, तब तक कभी बाय ही नहीं आएगा। सो यहाँ पे वो फैक्टर चेंज हो जाते हैं। सर लेकिन ये एग्जिट प्राइस का आप थोड़ा सा हमें ये बता दें, क्योंकि एग्जिट प्राइस में कई ऐसे है जो मतलब 28 या 30% तक है। मतलब अगर मैं सोचूं कि भाई एक लार्ज कैप कंपनी या फिर मिड कैप कंपनी, तो वो मतलब 15 से 20% ड्रॉ डाउन होगी तो उसका प्रॉफिट मतलब ऑल टाइम हाई प्रॉफिट से काफी नीचे आ जाएगा। तो मतलब वहां ऐसा पे कुछ आप नहीं है, एग्जिट प्राइस नहीं आपका रखते हो? आपका आपका एग्जिट का प्राइस भी चेंज होता रहेगा ना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एमसीएक्स आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है। एमसीएक्स जब से बाय रेटिंग में आया तब से 77% बढ़ गया, तो ओके ऑफकोर्स उसका नीचे का एग्जिट प्राइस तो नीचे डिफरेंस होगा, बिकॉज वो वन वे बड़ा होगा, ठीक है। ओके तो ये जो 4400 है वो शायद 2 महीने में 6000 भी हो जाएगा। ओके तो ये कोई 4400 स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये चेंज होता जाएगा। सो आज आपको आपको क्या पता चलता है कि भाई एमसीएक्स 8900 पे जब 77% स्टॉक बुल मार्केट से बढ़ गया है और उसका एग्जिट प्राइस 50% पे है, तो आज की डेट में ये रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता एमसीएक्स में। ओके पर जैसे सेम थिंग आज मैं रिलायंस देखूं, रिलायंस इंडस्ट्री, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है बॉस, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन वी आर डूइंग। आज रिलायंस 1500 रुपये में है, एड में आ गया, यहां से बढ़ा ही नहीं है, और 1100 रुपये का है, तो तकरीबन 15-20% का स्टॉप लॉस हुआ, 15% का एवरेज स्टॉप लॉस हुआ। तो ये क्या बताता है कि ये नई तेजी का नया स्टॉक आ सकता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके
So what we are trying to tell you is that to give you an understanding that are you buying something which is totally risk versus reward ratio में lower end पे है, ओके और आइदर फॉर एग्जांपल ये रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो में अच्छे पॉइंट पे है, तो आपका मार्जिन ऑफ मेकिंग मनी विल गेट हायर। रिलायंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा या एमसीएक्स नहीं बढ़ेगा, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। ओके या सो दिस इज हाउ इट इज, बट या फॉर श्योर वी हैव टेकन द फीडबैक एंड वी विल मेक श्योर कि कुछ उसमें ऐसा करें हम कि जहां पे आपको ये बेनिफिट मिल सके। ओके थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जो मैं लिस्ट हर रोज की डाउनलोड करता हूँ तो उसमें मैं डेली रख के मैं अभी के लिए करता हूँ, जो डेली में जो स्टॉक आते हैं मतलब के स्कोर 3 है और जोन बुल है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मतलब वहां पे जाता हूँ जहाँ पे मतलब ये टाइम फ्रेम का है, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं वीकली या मंथली करता हूँ, जैसे मंथली मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी मंथली में जब स्टॉक भाग गया होगा मतलब आगे चला गया होगा उसके बाद मुझे पता चलेगा, तो ये क्राइटेरिया मतलब किस तरह से होगा कि मुझे डेली का पता चले? नहीं, वो तो डेली में आप टोटल मार्केट में वन डे में कर दो और ये ऐड का कर दो और जोन कर दो, तो आपका डेली जितने भी स्टॉक है, आज फॉर एग्जांपल इतने स्टॉक आया है, कल यानी 5 स्टॉक आया है आपको पता है, और आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दो। हाँ वो तो हर रोज का होता ही है मेरा, लेकिन मैं वीकली के बेसिस पे कर रहा हूँ ना, वीकली या मंथली के बेसिस पे, तभी वो स्टॉक वो तो बढ़ गया अरे होता है भैया उसके बाद पता चलता है। वो तो ऐसा ही होगा ना, जैसे आईडीबीआई बैंक सैटरडे आया है, फ्राइडे आया है, ठीक है, ओके अब मंथली में देखोगे और आईडीबीआई बैंक समझो 20% बढ़ गया, ओके और आपने 10 दिन के बाद देखा कि कौन से स्टॉक है जो मंथ में आए हैं ग्रीन में, ओके तो आईडीबीआई बैंक 20% बढ़ेगा, वही दिखाएगा ना। ओके वो समझ गया, लेकिन मेरा कहने का ये कि जब भी वो आए तभी उसके एक्सेल में आ जाते हैं तो सही होता हमारे लिए। वो तो डेली में तो फ्रेम में आ ही रहे हैं ना। हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो डेली करके हमें चेक करना पड़ता है, अगर मैं मंथली में करूंगा तो ये नहीं आ रहा है अभी। नहीं, मंथली में तो सब मंथली के स्टॉक आएंगे ना, जो एक मंथ में सब चेंज हुए वही आएंगे। जैसे ओके सर। ये एक मंथ में इतने सारे स्टॉक आए हैं, तो वो मैं कैसे मंथ में आपको डिसाइड करके, आप बोल रहे हो कि डेट से फिल्टर किया जाए स्टॉक? हाँ सर, मतलब अगर मैं मंथली का भी मैं एक्सेल डाउनलोड कर रहा हूँ तो जब वो आए मंथली में तभी वो मेरे एड में हो जाए। नहीं, वो तो डेली से ही पता चलेगा, ऐसे तो कैसे पता ही नहीं चलेगा ना, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर ओके। वी कैन टॉक ऑफलाइन फॉर इट, राइट? थैंक यू, ओके थैंक यू सागर। Yeah, fine. I think so. We had anybody has a question? Yeah, Rohan, Yeah. Rohan Yes. Sunny here. Yeah, Yeah, Sunny. actually, I'm just adding a point. अगर हम यहाँ पे डिफरेंस का फिल्टर में डाल दें, फिल्टर में अगर हम डिफरेंस लगा दें, यहाँ पे है ना डिफरेंस? रिस्क टू सीएमपी, नो हाँ नो, हाँ ये नो, दिस डिफरेंस इज 0%, हाँ 0.027%। हाँ, तो अगर वो ये हो जाएगा। तो हो राइट। जाएगा, अगर हम ये हाँ फिल्टर में डाल दें तो हमें ये पता हाँ चल जाएगा कि वो बुल में है और अभी तक वो बढ़ा नहीं है, सो वी हाँ। कैन टारगेट दो स्टॉक्स। या या फिर या अभी कोई 1% हमारे रिस्क पैरामीटर में है, 1-2% में, तो ओनली द डिफरेंस का अगर हम फिल्टर में लगा दें, इट विल बी अ गुड। या काजल प्लीज Noted, नोट। sir. थैंक यू सनी फॉर गिविंग दिस वेरी गुड फीचर। ये सिंपल है पर इट विल वर्क, या आई थिंक सो। जो सागर का जो क्वेरी था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। Thank you, Sunny, for giving. Thank you guys for being over here. Vijay, you have a question? Okay, no problem.